Very good morning, students. My name is Ankush and I am from district Hamirpur, Himachal Pradesh. Today, the topic of especially for the plus 2 class, and the name of the topic is the chemical kinetics. First, I just tell you what we can see and what we can read and learn in the chemical kinetics. There are the three parameters. Firstly, from the name, it's a chemical kinetics. It's a derived from the two words, divided into two words. One is a chemical, that is a chemical reactions. That is chemical reactions. And here the meaning of this kinetics is speed. In any chapter, we can just teach or learn about the speed of the chemical reaction. That is called as a chemical kinetics. Now, there are three parameters where we can study about the rate of reaction. First, that is spontaneity. Second, extent of the reactions. And your third is that is rate of reaction. So now, from the first spontaneity of the reaction, that is studied in the chapter thermodynamics. हम लोग बच्चों स्पॉन्टेनिटी के बारे में पढ़ते हैं चैप्टर थर्मोडायनामिक्स में कि कोई भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस. एंड सेकंड हमारे पास रहता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. हियर वी कैन सी दैट द रिएक्शन इज द गोइंग अपवर्ड डायरेक्शंस और द बैकवर्ड डायरेक्शंस. The direction of the it's a forward or the backward direction. We can study it in the lesson number equilibrium. कौन सा चैप्टर में इसको रीड करते हैं? Equilibrium. And in the third, the parameter that is the rate of reaction, that's related to the chemical kinetics. So now, come to the next slide of this. What we have the index of this. Now, index में हम लोग क्या-क्या चीजें पढ़ने वाले? The rate of reaction, the rate law, method to analyze the rate of reaction, method to monitoring the progress of the reaction, Arrhenius theory, effect of the catalyst on the rate of reaction, collision theory. इसी के अंदर हम लोग जो और चीजें पढ़ने वाले हैं that is the order, molecularity, rate law जो हमने लिख दिया, ये चीजें हम लोग सारी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. Now come to the next slide of this. So starting from the chapter name, what is the chemical kinetics? It is the branch of the chemistry which deals with the rate of chemical reaction and the factors affecting the rate of reaction and the mechanism. ऐसी ब्रांच जो यहाँ पे डील करते हैं किसके साथ? केमिकल रिएक्शंस के साथ. और किस चीज का? द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. हम उसकी स्पीड के बारे में पढ़ते हैं और वहां पे स्पीड उसकी क्या है. तो यहाँ पर हम लोग बच्चों तीन टाइप की स्पीड के बारे में पढ़ेंगे. नाउ फर्स्ट स्पीड हमारे पास दैट इज इंस्टेंटेनियस रिएक्शन. सेकंड रहती है हमारे पास मॉडरेट. थर्ड रहता है हमारे पास बच्चों दैट इज द स्लो रिएक्शन. इंस्टेंटेनियस रिएक्शन को हम लोग बच्चों एक और चीज में कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज ए फास्ट रिएक्शन. कौन सा रिएक्शन है बेटा? फास्ट रिएक्शन व्हिच कैन डन इमीडिएटली. नाउ वी जस्ट टेकिंग द एग्जांपल हियर दैट इज NaOH plus HCl. Here NCl plus H2 belong to the क्या? Instantaneous reaction, which is the requirement of the time that is for the small time period, and where we can denote it for the dx upon dt. In the rate of reaction, we can study the change in the concentration with respect to time. That's why we can use the d upon dt for the small range of or the small period of time. And for the second, for the long period of time, we can use the average rate of reaction, where we can use the delta. That is the delta x upon delta t. Now, come to the point of the second, that is called as a moderate reaction. So now students, in the moderate reactions, हम लोग the time between them is the between the instantaneous and the slow reaction. थोड़ा सा हाँ टाइम उसका लाई करेगा इंस्टेंटेनियस और स्लो रिएक्शन के बीच में. Means taking the example of N2 H2. Now that is 3. हमारे पास रहेगा that is the NH3.
Now, preparation of the ammonia, that also the name of the process is Haber's process. कौन सा प्रोसेस रहता है बच्चों? Haber's process. वैसे ही हमारे पास H2 plus I2 hydrogen iodide is also belong to the moderate reaction. Now come to the slow reaction. Now taking the example of the rusting of the iron. In the rusting of the iron हम लोग देखते हैं एक लोहे को जंग लगने के लिए न जाने कितना समय लग जाता है. भले उसमें वर्कआउट करता है मॉइस्चर एयर की प्रेजेंस में रहता है, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. कौन बैठा रहेगा? एक हफ्ता लगे टाइम उसको जंग लगने में, 2 हफ्ता. इट्स अ वेरी स्लो रिएक्शन. इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर दिस. So this type of the rate of reactions, 3 type: instantaneous, moderate and the slow reaction. Now come one thing more. I'm just telling you one thing. इस चैप्टर के हम मेन जो इम्पोर्टेंट है, हम लोग दवाइयां देखते हैं. आपने देखा होगा मेडिसिन के ऊपर भी एक्सपायरी डेट लिखी होती है. जानते हो क्यों? क्योंकि हम जानते हैं मेडिसिन कोई भी रिएक्शन है, केमिकल है, इट कैन चेंज द कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एक समय के बाद उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है. इस बात का ध्यान रखना. वन थिंग मोर, एक और आपको चीज बता दूं यहाँ पर. तभी कहते हैं मैक्सिमम दवाई को कहाँ रखना चाहिए? ओपन खुले में नहीं रखते, उसको बंद करके रखा जाता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो हमारा जो पहला टॉपिक है जो इंडेक्स में हमने रीड किया था, दैट इज जो हमने पहला रीड किया था, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन. In the rate of reaction, the change in the concentration with respect to time. Now, change in concentration with respect to time. So हमें अच्छे से पता है concentration को कैसे लिखते हैं? Number of the mole dissolved per liter in the solution upon time. So now, n क्या लिखते हैं हम लोग? Mole. और जो हमारे पास solution लीटर है वो किसमें आ गया? लीटर. इसको क्या लिख लूंगा मैं? Mole per liter. So now, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट आ गई मोल्स पर लीटर, टाइम की यूनिट आ गई सेकेंड. नाउ मोल पर लीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन. कोई भी रिएक्शन जब हमारे पास उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. नाउ टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द कोई भी रिएक्टेंट जब हमारे पास प्रोडक्ट में चेंज होगा बेटो, तो ये रिएक्टेंट था और ये हमारे पास प्रोडक्ट है. हमारे पास जब चेंज होगा फ्रॉम स्टार्टिंग इन द रिएक्टेंट देयर concentration is decreases and then the product their concentration is increases. So now in the case of the reactant we can use the sign, कौन सा? नेगेटिव साइन हम लोग यूज करते हैं. It denotes that the concentration of the reaction is decreases in the case of reactant. Now we can just take some example to just prove that how we can just represent the rate of reaction. Now come to the next slide. In the next slide बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं N2. वही जो हमने पिछली रिएक्शन लिखा था N2 plus 3H2 और हमारे पास था NH3. Now मैंने कहा in the case of reactant the minus sign we can use here. Now minus d N2 upon dt. Change in the concentration with respect to time. So reactant में हमारे पास N2 था. Now in the case of here that is a d H2 upon नीचे क्या जाएगा? dt और साथ में लग जाएगा 1/3. So now for the NH3 that is a 1/2 और d upon dt that is the NH3. तो यहाँ साइन कौन सा आएगा? Positive. Again repeat the one thing, you can just use the minus sign in the case of the reactant and you can use the positive sign on the case of products. So now come to the next slide. So we can just read out and learn something more about from the rate of the reaction from the graphically. From in the case of the graphs we can see that here concentration of the reaction is here, that is the C1. That is from the time t1, from the time t2 that is c2. So now that the rate of the reaction that is that is c2 minus c1 delta x upon delta t is equal to c2 minus c1 and t2 minus t1. It is a way to just find out the rate of average rate of a reaction. Same like as here. reactant क्या रह रहा है हमारे पास? डिक्रीज कर रहा है
एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या कर रही है, इंक्रीज. अगेन दिस ग्राफ इज अ वर्सेस कंसंट्रेशन वर्सेस क्या, टाइम की वर्सेस में आ रहा है. और वैसे ही रेक्टेंट बता रहा है ऐसे डिक्रीज कर रहा है, प्रोडक्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज. दैट्स व्हाई वी कैन यूज द नेगेटिव साइन इन द केस ऑफ रेक्टेंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. इन द नेक्स्ट स्लाइड हमने ये चीजें पढ़ी थी पहले बच्चों. फास्ट इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया, स्लो रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया और मॉडरेट रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. Now we are just taking the one question at here. For the reaction N2O5, in the case of 2NO2 and plus half of the O2. Now the value of the rate of the disappearance of the N2O5 was found to be 6.025 into 10 raised to the minus 3 moles per liter per second, and the value of the rate of the formation of NO2. Now सबसे पहले मुझे आप सॉल्व करके बताओगे विद ऑनेस्टी. वीडियो को अपना पॉज करोगे, स्टॉप करोगे, उसके बाद खुद सॉल्व करोगे, उसके बाद ये आंसर चेक करोगे. मैं इसको सॉल्व करके आपके सामने दिखा रहा हूँ. हमें निकालनी है किसकी, रेट ऑफ फॉर्मेशन NO2 की. नाउ कम हियर हमारे पास दिया गया है दैट इज d N2O5 upon dt is equal to positive 1/2 d upon dt, that is a NO2. हमें यही चीजें चाहिए. फॉर्मेशन पूछी है NO2 की निकालनी है. नाउ N2O5 की हमारे को डिसअपियरेंस की वैल्यू दी गई है कितनी, 6.25 into 10 raised to power minus 3. Now here 1/2 d upon dt NO2 d by d t. NO2 को यही रहने दो और 2 उधर चला जाएगा. 6.25 into 10 raised to power minus 3. After solving you have निकालोगे आंसर 1.25 into 10 raised to power minus 3 moles per liter per second. Now come to the next slide. Yes, rate of reaction के बारे में और rate law हम लोग पढ़ेंगे. जो rate law है हमारे पास, rate of reaction is directly proportional to the molar concentration of the reactant. Molar concentration of the reaction. हमारे पास हमने रिएक्शन एक कंसीडर किया, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स एंड दैट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स. रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या रहेगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. एंड पावर कौन सी आ गई, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो कहां पर आ गए, इसके पावर में लग गए हैं. नाउ when just remove the proportionality sign, we just put up the value at here is that's a k. So that's a proportionality constant, and this k is known as the rate law. Now come to the next slide. So now here is put out the value of the k. कि हमारे पास k की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये हमारे पास है. So k की यूनिट हमारे पास मोल 1 minus n minus 1 s minus 1. So these are the all the units of the important which we can examination point of view. So again totally revised from this chapter. From starting we can read out about the chemical kinetics. In that chapter we can all briefly know about the how the chemical reaction occur. It's a fast reaction, it's a slow reaction, it's a moderate reaction. Now there are we can list in the lecture 3 type of the reaction: instantaneous reaction, moderate reaction and slow reaction. Now thanks a lot for this. Share, subscribe and like this video, and आपका अपना प्यार बना रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे मैं और वीडियो बनाऊं और आपको नए नए टॉपिक्स साथ में लेकर आऊं. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. जो आगे हमारे पास पेंडिंग चैप्टर बच गया उसको हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.